ये हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है. Hello guys and welcome back to my channel, and today I am back with a compilation video of a couple of close calls and a road rage video. No one was seriously injured or hurt in any of these videos, और मैं हर वीडियो के पीछे नरेशन भी देता रहूंगा कि कहाँ पे कैसे और क्यों हुआ था वो पर्टिकुलर इंसिडेंट. So I hope you would enjoy it, and this is not to make fun of anyone. Having said that, please drive and ride safely on the roads. It's a freaking jungle out there. आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है. So make sure that you drive and ride responsibly and safely as much as possible. So having said that, without further ado, let's get started. So this clip is from a trip to Ooty from Maisanaguri. We were heading to Ooty from Maisanaguri, and inside Bandipur Forest Reserve, बिल्कुल भी ये दिखा नहीं. ये डियर जो है ये सडनली सामने आ गया और सामने वाले कार से पहले बचा और फिर हमारे कार के सामने से निकल गया. सो या, नो वन वाज सीरियसली इंजर्ड, बट इट वाज इंडीड अ क्लोज कॉल. हैड टू ब्रेक रियली हार्ड फॉर दैट. Alright, so this incident is about the Audi that you see in the screen. और ये जो कार थी ये काफ़ी देर से he was changing the lane and somehow not letting me go. मैंने उनको हॉन्क भी किया और लाइट्स भी फ्लैश कर रहा था ताकि वो मुझे जगह दे दे, बट ही कंटिन्यूड डूइंग दैट. प्रॉब्ली ही वाज एंजॉयिंग इट, जो कि मुझे बाद में समझ में आने लगा. एंड देन आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ओवरटेक एंड मूव पुश ऑफ माई वे. एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई एक्चुअली पुश्ड ऑफ. और क्योंकि मेरा घर पास में ही था तो मैं बस निकल गया अपने रास्ते. मुझे लगा इट्स ऑल फाइन, मे बी ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम problems for us. And then this happens. What the उसने ऐसा क्यों किया? So आप लोगों ने देखा कि उसने क्या किया. And then he blocked my way. तूने देखा है उसने क्या किया? देख रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है. And that's it. And then he tried to fled the scene, and yeah, that's about it. So उसका intention बस वही था कि to intimidate someone on the road. So उसने वही करने की कोशिश की. There were a bunch of young guys in the car who were probably having fun, or probably they were intoxicated. So yeah, that's about it. Alright, so this clip is about this black Amaze, the black Honda Amaze. और एक लेडी ड्राइवर थे इस कार में, और सडनली उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ये किया. ऐसे कौन लेन चेंज करता है भाई? मतलब शी डिड नॉट इवन थिंक ऑफ लुकिंग बिहाइंड और इंडिकेटर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई. सो या, दैट्स हाउ पीपल ड्राइव ऑन द रोड. सो या, जस्ट बी सेफ आउट देयर. अगर आप मोटरसाइकिल पे होते तो कहीं पड़े होते शायद, इसीलिए ऑलवेज ड्राइव सेफली. Alright, in this clip just observe the motorcycle in front of the car. ये मस्त मौला अपने धुन में जा रहे थे और एक महान इंसान जो सडनली बीच में बाइक डाल देता है. ऐसे होता ये है कि ये लोग पैनिक ब्रेक करते हैं और गिर जाते हैं. उनके सारे टमाटर भी गिर जाते हैं इनके साथ. चलिए दोबारा देखते हैं क्या हुआ. So clearly they're not paying attention on the road. And what happens is when they suddenly see someone approaching, they panic. और हमारे पल्सर भाई चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, जिनको पता होता है कि उनके वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है. बिल्कुल चुपचाप बिना यहाँ वहाँ देखे वहाँ से निकल लेते हैं. So thank you for watching this video guys. I urge you to drive safely, always drive and ride safely. And if you like the video, do give it a thumbs up. If you are new to the channel, consider subscribing.
And if you want to share your thoughts, there's always the comment box. You can always put down your comments, and I reply to all the comments that you guys write. Thanks again for watching. Have a nice day.